अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे विद आंसर की। फर्स्ट एमसीक्यू, इफ एथलीट्स कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन दे यूज देन दे विल गेन वेट, आइसोक्लोरिक डाइट, हाइपर प्रोटीन डाइट, हाइपर कैलोरीफिक डाइट या फिर हाइपोक्लोरीफिक डाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइपर क्लोरीफिक डाइट। इफ एथलीट कंज्यूम एज मच एनर्जी एज दे यूज देन दे विल स्टे द सेम वेट। अगर तो उसका वेट चेंज नहीं हो रहा तो कौन सी डाइट होगी? आइसोक्लोरिफिक डाइट, हाइपर प्रोटीन डाइट, हाइपर क्लोरिफिक डाइट या फिर हाइपोक्लोरिफिक डाइट। तो इसका मतलब आइसो होगा, आइसो मीन सेम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ द एथलीट कंज्यूम लेस एनर्जी देन दे यूज देन दे विल लॉस वेट। अब वेट उसका लॉस हो रहा है तो कौन सी डाइट उसकी होगी? हाइपोक्लोरिफिक डाइट। 1 किलो कैलोरीज इक्वल डैश जॉल्स, 1 किलो कैलोरीज इक्वल टू 4.2 जॉल्स। Fifth MCQ, to maintain energy balance, the estimated average energy intake required in healthy adults are 2550 calories per day for males, 2550 kilocalories per day for males, 2940 kilocalories per day for females, 2940 calories per day for females। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2550 kilocalories per day for males। The following picture shows, इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? एल्बो इमोबिलाइजर स्प्लिंट, टेनिस एल्बो स्प्लिंट, लॉकिंग एल्बो एक्सटेंशन आर्थोसिस, नन ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन एल्बो इमोबिलाइजर स्प्लिंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कंडीशन मे बी कॉमनली सीन इन रोअर्स। रोअर्स में कौन सी कंडीशन हमें मिलती है? पेरोनियल नर्व इंजरी, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, टार्सल टनल सिंड्रोम या फिर प्लांटर फिशाइटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। Carbohydrate provide approximately dash and are the primary fuel source for high intensity exercises. 2 kilocalories, 4 kilocalories, 6 kilocalories per gram या फिर 8 kilocalories per gram। तो करेक्ट ऑप्शन है 4 kilocalories per gram। The following foods are high glycemic index except, किसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है इसमें से? वाइट ब्रेड, पीनट्स एंड एप्रिकॉट्स, पोटैटो या फिर कॉर्नफ्लैक्स एंड जेली बीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पीनट्स एंड एप्रिकॉट्स। 10th MCQ है, डैश कॉमनली प्रेजेंट्स इन ग्राइपिंग एथलीट्स यूज एज आर्करी रैकेट्स एंड थ्रोइंग एथलीट्स। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, प्रोनेटा टेरीज सिंड्रोम या फिर रेडियल टनल सिंड्रोम। तो करेक्ट ऑप्शन है कार्पल टनल सिंड्रोम। प्रोटीन विच कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली डैश इज आल्सो यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। प्रोटीन से कितनी हमें एनर्जी मिलती है? 2 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 6 किलो कैलोरीज पर ग्राम या फिर 8 किलो कैलोरीज पर ग्राम। करेक्ट ऑप्शन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 12th MCQ, सर्वाइकल डैश रेटिकुलोपैथी शो ब्रेकियोरेडियलिस एंड रिस्ट एक्सटेंशन वीकनेस। तो किस लेवल की इंजरी होगी? C5 रेटिकुलोपैथी, C6 रेटिकुलोपैथी, C7 रेटिकुलोपैथी या फिर C8 रेटिकुलोपैथी। करेक्ट ऑप्शन C6 रेटिकुलोपैथी। Fat has many essential functions within the body that includes except no energy provision, formation of cell membrane and nerve fibers, protection of vital organs, delta production of hormones. Correct option no energy provision. Cubital tunnel syndrome is example of low magnitude stress, moderate magnitude stress, high magnitude stress या फिर extreme magnitude stress. Correct option moderate magnitude stress. 15 MCQ, the following picture show elbow immobilizer splint, tennis elbow splint, locking elbow extension arthrosis, none of above. Correct option locking elbow extension arthrosis. 16 MCQ, following are the symptoms of piriformis syndrome except pain and tenderness in buttock region at the sciatic notch, contralateral radiating pain in the sciatic nerve distribution. Symptoms may be exacerbated by stretching the piriformis via adduction and medial rotation of the hip joint. Delta, palpation of the sciatic nerve notch, reproduced symptom. Correct option will be contralateral radiating pain in sciatic nerve distribution. Next, 17 MCQ. Elbow pain radiating to hand with sensory symptoms and weakness in the finger abductors and thumb adductors are the symptoms of medial nerve syndrome, cubital tunnel syndrome, radial tunnel syndrome या फिर carpal tunnel syndrome. Correct option cubital tunnel syndrome. 18 MCQ, fat contains approximately dash, making it a very efficient way for the body to store large amount of energy.
5 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम या 8 किलो कैलोरीज पर ग्राम. Correct option is 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम. Question 19. A transient physiological block caused by ischemia from the pressure or stretch of a nerve with no Valerian degeneration. Neurontemesis, nervetemesis, exontemesis, न्यूरोपेरेक्सिया. नो वलेरियन डिजनरेशन, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? न्यूरोपेरेक्सिया. 20th MCQ. Dash are generally liquid at room temperature and are found in plants, source and fish. Saturated fats, unsaturated fatty acids, trans fatty acids या proteins. Correct option unsaturated fatty acids. 21st MCQ. The essential fatty acids are omega-3, omega-6, linolenic acid, all of above. Correct option is all of above. Question 22. Dash results from compression of the large artery under the collarbone. Venous thoracic outlet syndrome, arterial thoracic outlet syndrome, neurologic thoracic outlet syndrome या myogenic thoracic outlet syndrome. Compression of large artery है तो ये होगा हमारे पास arterial thoracic syndrome. 23rd MCQ. Athletes should aim to avoid or reduce their intake of following high fat foods except cake, biscuit, soybeans and nuts, Charlie chocolates, fat on meat, delta option sausage या फिर pasties. तो correct option soybeans and nuts. 24th MCQ. Two of the most important minerals for the athletes are iron and sodium, potassium and calcium, iron and calcium, phosphate and calcium. Correct option iron and calcium are the two most important minerals for athletes. Last MCQ. For optimal cardiovascular and thermoregulatory function, athletes must therefore maintain dash, which results in decrease in both cardiovascular strength and power performance. Sufficient body calcium level, sufficient body vitamins level, sufficient body energy level, sufficient body fluids level. तो इसका करेक्ट ऑप्शन sufficient body fluids level. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.